السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما. My dear brothers and sisters and young ones, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again, and welcome to our live show coming to you direct from Iqra TV studios here on Manchester Road in Bradford, West Yorkshire. Alhamdulillah. Last week we were doing a program, well, it was a two-segment program on high blood pressure, and we mentioned how dangerous this blood pressure is. And we mentioned that 76% of people who've had a stroke, 76% of these people had high BP. 74% of people with congestive heart failure, 74% also had high blood pressure, and 69% of people who had a stroke had blood pressure. So what does that tell us? That tells us that underlying blood pressure puts too much pressure on the artery walls. If you have a hose pipe in your garden, and in the hose pipe there's a small chink. Now, if you were to put that water tap on full power and full pressure, then what would happen is where the chink is, that would more often than not have a small, it burst, and you'd have another kind of leakage from that pipe. So instead of water coming from the end of the pipe, you'd also have water coming from this kind of leak. Now, same thing, when your blood pressure and your heart is pumping blood, it's going to affect the closed system, which is the venous system. Now, many South Asian households have people with high blood pressure. Now, not just high blood pressure, you have high blood pressure and you also have diabetes and you have high cholesterol. It's like a perfect storm, and one feeds into the other, and together it's known as metabolic syndrome. And this, as I mentioned before, is the single biggest killer in the Western world. मैं ये कह रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर जो है लोगों, हमारे जो एशियन हजरात हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा है. ब्लड प्रेशर का हाई होने का मतलब यही है, हमने गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर बताया था कि जो हमारे अंदर जो ब्लॉक्ड और बंद सिस्टम है खून की नालियों की, तो इसके अंदर खून की जो रफ्तार है, तो इस रफ्तार के अंदर जो क़ुव्वत होती है और प्रेशर होता है, जब ये बढ़ जाती है और ये जो खून के नालियाँ हैं, उनके जो दीवारें हैं, तो उनके साथ जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है. कभी मौका ये होता है कि बिल्कुल ज़्यादा बढ़ने के बाद वहाँ से एक किस्म की टूट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक या एन्यूरिज्म. या बाज़ मरतबा खून तक जो दिल है, तो दिल के ख़ास मसल तक खून नहीं पहुँचता है जितना हमें चाहिए. ऑक्सीजन ज़ाहिर बात है, खून के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन और खून वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो वो जो हिस्सा है वो मर जाता है. इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक. और इसके साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कि दिल की जो धड़कन होती है और जो चेम्बर्स होते हैं उनके अंदर नुकसानात होते हैं, तो दिल फेल होना शुरू कर लेता है. और इन तीनों बीमारियों का जिनका मैंने नाम लिया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एन्यूरिज्म या स्ट्रोक और हार्ट अटैक यानी कि वहाँ दिल के ख़ास मसल तक खून नहीं पहुँचता या कम पहुँचता है, तो वो जिस्म मर जाता है. बल्कि जहाँ भी वो हिस्सा दिल का मर जाता है, बल्कि जहाँ भी जिस्म के अंदर खून ना पहुँचे वो हिस्सा मर जाता है. तो ये तीनों चीज़ों का बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर का हाई होना. हमने बताया था कि 76% लोग जिनको स्ट्रोक होता है, 76% उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है. 74% लोगों को जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी है, उनको ब्लड प्रेशर रहता है. और 69% हजरात और ख़वातीन जिनको हार्ट अटैक होता है, तो उनको भी हाई ब्लड प्रेशर है. اور ہائی بلڈ پریشر صرف تنہا نہیں ہوتا بلکہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے. ڈائبٹیز کے ساتھ ظاہر بات ہے
جو ہمارے بکرے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کڈنیز, ان پر بھی اثر ہوتا ہے, اور جب کڈنیز خراب ہو تو کڈنیز کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے بلڈ پریشر, یعنی بلڈ پریشر پر. تو high blood pressure can cause kidney malfunction, and kidney malfunction or kind of tumors on the kidney can cause directly high blood pressure. So it's very, very important that we monitor our blood pressure daily. And I mentioned last week that normally before the age of 50, men have high blood pressure. After the age of 50, ladies have higher blood pressure than men. Now, I explained last week, because it's high blood pressure is known as a silent killer. You don't have symptoms until physiologically the pathology has set in. You'll only have, when you get atherosclerosis means when you have fat and plaque and homocysteine and other lipids that are now lining the lumen of your venous supply. So what was before that wide and blood could go through that easily has now narrowed to that amount, and sometimes even less. That is called atherosclerosis and atheroma, which is basically fat sticking onto the inside of like your hosepipe, for instance, and which makes the blood supply decrease and the pressure more. Okay. Now, these three things, high blood pressure, kidney disease, and CAD, coronary artery disease, all go together. And together, they cause 700,000 people to die in America, and England's not too far behind. 700,000 every year. In fact, sorry, not 700, a lot more than 700. 700,000, beg your pardon. 700,000 deaths of heart disease, 600,000 from cancer, and 300,000 from morbidity. So, zahir baat hai, you have to do something about this. A person can't live with high blood pressure, which reduces a person's quality of life no end. What do? You go to your GP. What does the GP do? First of all, the GP tells you need to make lifestyle changes. Now, first of all, do you make the lifestyle changes? You don't. جب آدمی کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اولاً تو آدمی کے اندر یہ علامتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم کے بلڈ پریشر کا نام ہے کہ خاموشی کے ساتھ مارنے والی بیماری. خاموشی کے ساتھ مارنے والی. جب آدمی کو ایک دم یعنی وہ کہتے ہیں نا سیریبل ہیمریج جب ہوتا ہے آدمی کو, تو ایک قسم کی جس طرح آدمی ایک دم ایک تھالی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتا ہے, تو اتنے جو آواز ہوتی ہے تو وہی جس کو کہتے ہیں نا سیریبل ہیمریج, اسی کے ساتھ ہوتی ہے. بہت ہی یعنی خطرناک بیماری ہے, اور بالکل آخر تک اس کے سمٹمز نہیں ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے. اور سمٹم اسی وقت ہوتے ہیں جس وقت رگوں کے اندر یہ ڈیمیج ہو گیا. تو ڈیمیج ہونے تک کوئی ظاہر علامت نہیں ہے, تو آدمی ٹھیک ٹھاک اپنا کام کرتا رہتا ہے, کبھی غصہ آتا ہے, لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن اندر سے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے رگوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے. اندر یہ جو یعنی موٹاپن ہے یہ اور کولیسٹرول ہے اور جو لپڈس ہیں وہاں وہ چمٹ رہے ہیں, اور آدمی کی جو اندر نالی ہوتی ہیں خونوں کی وہ رفتہ رفتہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. تو آدمی کو جب بیماری ہوتی ہے, آدمی کو پھر یعنی ایک قسم کا پیچھے سر کے اندر درد ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھار آدمی کو دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہاں تک خون نہیں پہنچ رہا ہے, اندر نالیاں بالکل تنگ ہو رہی ہیں. تو اس وقت آدمی جی پی کے پاس جب جاتا ہے تو جی پی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اندر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے, تو وہ چیک کرتا ہے. اولاً آپ کا بی پی لیتا ہے, وہاں لیتا ہے. اس کے بعد ایک مشین آپ کو ایک 24 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ لگاتے ہیں, جو ہر 20-15 آدھے گھنٹے کے بعد جو آن ہوتی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر لیتی ہے. لیکن یہ مشین بھی ہے نا, ظاہر بات جب آدمی کے ساتھ یہ بلڈ پریشر مشین ہے تو آدمی کو ایک قسم کی گھبراہٹ کی وجہ سے, جس کو کہتے ہیں وائٹ کلر ہائپر ٹینشن, آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. تو یہ بھی ایک حد تک یعنی اچھا تشخیص نہیں ہے ہائی بلڈ پریشر کا. بہرحال تو آدمی اور چند اور ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, ایکوکارڈیوگرام کرتے ہیں جو دل کے زور کو دیکھنے کے لیے, بلڈ پریشر کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جب میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے. تو 2 قسم کے بلڈ پریشر ہیں, سسٹولک اور ڈائسٹولک. میں بتایا تھا سسٹولک کہتے ہیں جب دل گوئے کے جوش مارتا ہے اور جسم کے ہر کونے تک خون یعنی پہنچاتا ہے. سسٹولک اور ڈائسٹولک دو. دل یعنی جب دل آدمی کے دھڑکن ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے ڈب ڈب
डुब डुब। अगर आप स्टेथोस्कोप लगाएं छाती के साथ और आपको इस तरह की आवाज़ आएगी डुब 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 डुब। ये जो डुब डुब है, एक तरफ से खून आ रहा है और दूसरी तरफ से यानी दिल के अंदर, दिल के जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खून आ रहा है और माफ़ करना, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खून आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के साथ वहाँ से निकलता है। तो आना और निकलना, आना और निकलना, डुब 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 डुब, ये है। तो पहली मरतबा जब खून आता है लंग्स से तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, और जब निकलता है जोश के साथ उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर लगभग होना चाहिए, जो नंबर 1 है सिस्टोलिक, उसका 100 से लेकर 40 तक, 100 to 40, 140। तो अगर इसके लगभग हो तो ठीक है, और इससे अगर ऊपर हो तो हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उससे कम हो तो लो, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। 100 और 140 के दरमियान लगभग आदमी का ब्लड प्रेशर रहना चाहिए अमूमन। अगर आदमी कोई वर्जिश कर रहा है या कोई और स्ट्रेस है तो ज़ाहिर बात है ऊपर होगा, लेकिन वो वक्ती तौर पर, फिर नीचे आ जाएगा। दैट्स व्हाट शुड हैपन। ये जो डायस्टोलिक है ना, तो इसका तकरीबन 60 से लेकर 90 तक रहना चाहिए, 60 to 90। अगर ये रीडिंग उसके अंदर हो तो ठीक है, अगर इससे नीचे हो तो लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन, और अगर उसके 90 से ऊपर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हाई ब्लड प्रेशर है। तो दोबारा कह लेता हूँ, ऊपर का जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से लेकर 140 तक होना चाहिए, अगर उससे ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उससे नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर। और इसके साथ जो डायस्टोलिक है, जो लोअर नंबर होता है, क्योंकि लंग से दिल तक बहुत करीब वास्ता है और इतनी डिस्टेंस भी नहीं है, तो वो लो होता है क्योंकि प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, आसानी से गिर जाता है, तो उसको 60 और 90 के दरमियान होना चाहिए। अगर 90 से ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अगर 60 से लो है तो लो ब्लड प्रेशर है। और ये भी समझने की बात है कि जो ख़वातीन होती हैं उनके नंबर कम होते हैं, उनकी अमूमन फ्रेम भी कम होती है। तो जहाँ मर्दों की 140 होता है या 135, तो औरतों का इससे कुछ कम होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी कम होता है, जहाँ मर्दों का तकरीबन 85 होता है, औरतों का 70 तक भी हो सकता है। तो इसको भी इसको भी समझो। मैंने ये भी बताया था कि जब आदमी ब्लड प्रेशर चेक करे तो चंद एहतियात करनी चाहिए। अव्वलन आदमी को 5 मिनट बैठना चाहिए रिलैक्स, फिर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अमूमन मैं तो करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बाजू का, लेकिन राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आदमी अपने जो पाँव हैं तो ज़मीन पर रखें, इसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें, और 1 मरतबा ना करें, 2 मरतबा करें, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, और इसके बाद उसको लिखें। तो ये आदमी को करना चाहिए दिन के अंदर 2-3 मरतबा, especially when you're over the age of 40, because blood pressure, it's no good finding out you've got high blood pressure when pathology has set in and the venous supply is now blocked. Many people, I mentioned before that many people don't survive their first heart attack. In fact, the stats say 1 in 2 don't survive. 50% people die from the first heart attack. So it makes sense, to kind of keep an eye on things beforehand. And also, if your venous supply needs cleaning, it's good to have angiography. Now, angiography is a technique where they put a dye into your venous supply and see where there is a blockage. What happens with the blockage is that if there's a blockage there, it can go on and cause a heart attack. Yeah, because there's no blood going, and sometimes it can increase, and that's what causes a heart attack. So what they do then is they do something called angioplasty, where they kind of put a small stent in, and that opens up the lumen, and you're good to go. It's a very important procedure, and it can save life, because rather than waiting for this heart attack to happen and seeing what your chances are and what your kismet is, remember 1 in 2 people don't survive first heart attacks. 1 in 2 don't survive. These are crazy odds. So rather than waiting for that, you need to be on top of things. You need to speak to your GP. If you have these signs, it's better sooner than later. Let your GP know. He can put you on various things, and inshallah after the break we'll go through the various things they put you on. Things like ACE inhibitors, beta blockers, diuretics, angiotensin converting inhibitors, various things. And I'll tell you the pros and the cons of these things. Some of these things can actually cause you congestive heart failure. They can cause, because they're powerful drugs, and they're only given because a person cannot or will not do, make lifestyle changes. So I'll mention, inshallah, what lifestyle changes you need to do, and I'll mention what these drugs do and what the side effects are, and then I'll mention some various homeopathic remedies that homeopaths use
for people with high blood pressure. In fact, I have, if you stay with us inshallah, हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, होम्योपैथिक नुस्खा जो 3 दवाइयों से मुश्तमिल है और बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद है दिल की बीमारियों के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी इसके असरात नमूदार होंगे इंशाल्लाह। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह ब्रेक के बाद होगा, तो प्लीज़ स्टे विद अस। After the break, we'll be discussing we'll be discussing the medicine the GPs will give you for high blood pressure, and we'll be discussing what lifestyle changes you can do to address your blood pressure. And at the end, we will mention 3 homeopathic remedies which are very, very good for blood pressure. Alhamdulillah, they are almost as good as many other things. And also, we'll mention some nutritional supplements that you can use to help your heart, because your heart has to be strong. When the heart is strong, it can push the blood around the body with little effort. When there's little effort, there'll be less high blood pressure as well, inshallah. So please stay with us after the break, inshallah. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.